Hello students, how are you all? कैसे हो सभी? So once again, welcome to the class, and today we are going to discuss again the part from the change in the state of matter from the matter in our surrounding. Yes, we have discussed this topic in the previous class, है ना? हमने starting से थोड़ा सा topic इसका पहली class में किया था, and the remaining part we will complete it today. So in the previous class, what we have discussed, students, क्या पढ़ा था? We have seen how we can change or solid is converted into a liquid. Yes, by the process we call it as a melting. Similarly, from this liquid state is changed into gaseous state. Liquid state से gaseous state बनेगा. That will be by the process of boiling, isn't it? Then we have also seen कि गैशियस स्टेट से कैसे हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द कंडेंसेशन. यस, और लिक्विड को किस तरह से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग, इजंट इट? ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है इन आवर प्रीवियस क्लास. सो आज हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको आस्क यू अ क्वेश्चन कि इफ आई वांट टू चेंज अ सॉलिड इनटू अ गैशियस स्टेट, यदि मुझे सॉलिड को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना है विदाउट मेकिंग इट लिक्विड, उसको लिक्विड स्टेट में नहीं भेजना है, डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, या फिर गैशियस स्टेट से मुझे डायरेक्टली solid state में लाना. I want to make it in a solid state without going into a liquid state. Then is it possible? This was a question that I asked you, है ना? ये question पूछा था. So for that, I hope आप लोगों ने you have find the answer. And yes, so let's check what is the correct answer for that. Is it possible or not? Yeah. So yes, students, that is definitely possible, and this is possible by the process called as sublimation. Yeah. So what is a sublimation? क्या है sublimation? It is a change of state directly from a solid to a gas on heating without changing into a liquid state. That is called as a sublimation, है ना? किसी solid को directly हीट करने से जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट में जाने से नहीं जाएगा, आई कैन से यस. सो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन. हम क्या देखते हैं, वाटर को जब आइस को हम हीट करते हैं तो वो वाटर बनेगा, वाटर को जब बॉईल करते हैं तो वाटर वेपर बनेगा, है ना? सो सॉलिड से लिक्विड हो रहा, लिक्विड से गैसियस हो रहा. बट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा. तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सब्लिमेशन. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. Yeah, and this is done definitely by heating there. Okay, so this is a physical change. Sublimation क्या है? एक तरह का physical change है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नया substance नहीं बन रहा है, isn't it? हमको पता है what are the physical changes and what are the chemical changes. जहाँ पर where there is no new substance form, that we say that it is a physical change. So sublimation, it is a physical change only. Okay. The vapors that are formed, जब हम किसी को सब्लिमेट कर रहे हैं, जब कोई सॉलिड सब्लिमेट, कोई सब्सटेंस सब्लिमेट हो रहा है ऑन हीटिंग, सॉलिड से वेपर्स बन रहा है, तो जो वेपर्स फॉर्म होते हैं, यस, वो कलेक्ट किए जाएगा कहीं पे भी. जब वो कलेक्ट होके कूल्ड होते हैं, यस, व्हेन द वेपर्स दैट आर फॉर्म दे आर कलेक्टेड एंड कूल डाउन, वो सब्सटेंस जो है फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा विदाउट चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज अ फिजिकल चेंज. गॉट इट? आई विल एक्सप्लेन यू. हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, उसी में आपको पता चलेगा कि किस तरह से सॉलिड सब्लिमेट हो रहा है, दैट मीन्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और बाद में जब वो वेपर कूल डाउन होता है तो फिर से वही सॉलिड बन जाता है. उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आते. द केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट एट ऑल चेंज देयर, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज अ फिजिकल चेंज. यदि आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है रिलेटेड टू द सब्लिमेशन, तो हमेशा याद रखोगे कि दिस इज अ फिजिकल चेंज. यस, व्हाई दिस इज अ फिजिकल चेंज, आई जस्ट एक्सप्लेन यू. मैंने अभी आपको बताया. यस, तो जो सब्सटेंस, यस,
सब्लिमेट होता है, यानी जो सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? द सॉलिड सब्सटेंस दैट अंडरगो सब्लिमेशन दैट इज कॉल्ड एज द सबलाइन। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सबलाइन। यानी जो भी सब्सटेंस सब्लिमेट हो रहा है, जो भी सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, वो सब्सटेंस को हम बोलेंगे सबलाइन। सिमिलरली वो सॉलिड सब ऑब्टेन जो हो रहा है, यस दैट मीन्स जो सबलाइन बन रहा है, द सॉलिड दैट इज ऑब्टेन, जब उसको कूल किया जाएगा, उसके वेपर्स को जब कूल किया जाएगा और उससे जो नया सॉलिड बनेगा, फिर से वही सॉलिड बनेगा, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट। Yes, so the solid obtained by cooling the vapors of a solid is called as a sublimate. समझ में आ रहा है? पहला प्रोसेस क्या होगा कि सॉलिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर फॉर्म में। यस, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे सबलाइम, कि वो सबलाइम हुआ। Yes, it has been sublime. And then when that sublime, after cooling, वो जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, उसको जब कूल डाउन किया जाएगा, एंड व्हेन अगेन इट इज फॉर्मिंग द सॉलिड अगेन, जब अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे sublimate. I hope this is also clear. So in a fill in the blanks, this could be also asked that the solid substance that undergoes sublimation, what is it? It is sublime. And a solid obtained by cooling the vapors of the solid or of the sublime, it is called as what? It is your sublimate. I hope this is clear. Now students, if I say that sublimation में what we are providing the heat there, isn't it? Heat provide कर रहा है, तो ये किस तरह का प्रोसेस होगा? Heat require और ये heat लग रही है इसमें, so will it be an exothermic or it is an endothermic? What can you think about it? It is requiring heat. Yes, because whatever the conversion is done, it is in presence of heat. So definitely that is going to be an endothermic. Yes, remember this could also be asked. ये कभी कभी fill in the blanks में या one word answer में पूछा जा सकता है. Yes, so the process or what is it? Is it an exothermic or endothermic? No, it is an endothermic because it requires heat. Yes, it requires heat. I hope this is clear. Okay. So now the process of sublimation. Why this is important? Because this process is used for purification of solids. सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने में बहुत ज्यादा यूज होता है. साथ साथ में दिस प्रोसेस इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट yes a mixture which contains a constituent that sublime. यानी ऐसा कोई मिक्सचर है जिसमें से एक कंस्टिट्यूएंट ऐसा है कि जो सबलाइम हो सकता है, तो हम उसको वो मिक्सचर में से उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. Yes, so in that way the sublimation is also very useful there. Yes, and it is an endothermic process. I told you, मैंने अभी आपको बताया कि it is an endothermic process. Why it is an endothermic process? Because it requires heat. Yes, this process takes place in presence of heat. Yes, on heating. So this is an endothermic process. These are the two uses I can say. If someone is asking, आप यहाँ लिख सकते हो कि it is used for purification of solid, as well as it can be used to separate a mixture which contains a constituent that sublimes. For example, यदि मैं बोलती हूँ कि naphthalene, which are the examples of the substance that undergo sublimation? There are so many. बहुत कॉमन एग्जाम्पल है naphthalene balls, है ना. कैम्फर, हम सभी के घर में होता है कपूर, जो पूजा में यूज किया जाता है, isn't it? Camphor, it is also a substance that undergoes sublimation. It sublimes. कैम्फर को आप कपूर को खुला छोड़ दो, यस थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दो, यू विल सी दैट उसका जो साइज है, यस वो थोड़ा कम हो जाएगा. यस, यदि आप उसको थोड़ा एक दिन दो दिन के लिए ऐसे ही रहने दोगे, आप देखोगे कि थोड़े दिन में वो डिसअपियर हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं. क्यों? बिकॉज वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. यस, सो इट हैज सबलाइन. सिमिलरली naphthalene balls, yes, we keep in between the cloths, yeah, or in the woolen cloths, we keep it to preserve the cloth properly, ताकि उसमें कुछ
तो खराब ना हो जाए वो कपड़े, isn't it? इसीलिए हम वो बॉल्स रखते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं. So when you see in one season, if your mother has kept that, and in the next season when you take that sweater and you will check the naphthalene ball, definitely वो naphthalene ball का size भी कम हो जाएगा. Why? Because it sublimes. Definitely ये सारा process बहुत fast नहीं होता है. Yeah, it will take time because automatically वो धीरे धीरे sublime होता है. Yeah, so these all are very common example that undergo sublimation. Yeah, you can see this is an experiment जो हम आज explain करेंगे. Yes, and from there we will see how the sublimation takes place. Okay, now students, the common substance which undergoes sublimation, कौन कौन से? दो तो मैंने आपको बता दिया. I told you one is naphthalene balls, another is camphor. But yes, apart from that, ammonium chloride भी sublimate होता है. Iodine, it can also be there, and anthracene. Yes, so these are the common substances which undergo sublimation. There are so many others also, but these are the common. तो हम आज वही पढ़ेंगे. ये एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखेंगे? We will see that if we take a mixture, yeah, of ammonium chloride with salt, है ना, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर लिया. इसमें से हमको पता है कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट होता है. यस, इट अंडरगो सब्लिमेशन. सो हमको पता है कि आई कैन रिमूव दैट. यस, सो आई हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. मुझे क्या करना है? मुझे ये मिक्सचर में से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है, यानी सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग करना है. How I'll do that? I have taken that mixture in a plate or in a petri dish or a china dish, I can say. Yes, और evaporating dish भी बोलते हैं इसको, है ना. Then what we have seen, you see, हमने उसको एक funnel से cover कर दिया. I will take an highlighter, just a minute. Yes, we have covered this with a funnel, isn't it? This is a funnel through which we have covered it. साथ साथ में फनल की जो स्टेम है, जहां से ओपनिंग रहती है, उसको भी हमने कॉटन से पैक कर दिया. सो वी हैव पैक दैट ओपनिंग आल्सो. गॉट इट? सो ताकि क्या होगा, कोई भी गैस वहां से बाहर नहीं निकल सकती है. अब क्या हुआ? अब हमने इसको हीट करना शुरू किया. वी स्टार्टेड टू हीट दिस. Okay, so because of the heating, when we provide the heat, what happens? The ammonium chloride which is present in a mixture, yes, it sublimes. वो क्या होना शुरू करेगा? वो sublime होना शुरू कर जाएगा. That means, yes, it is converted. You will see, आप थोड़ी देर में देखोगे कि उसके vapors निकलेंगे. Yes, and this is, you can see the vapors of ammonium chloride. Yes, so उसके vapors निकलने लगेंगे थोड़ी देर में, and that is we can see the white colored vapors. And that white vapors किसके हैं? वो है अमोनियम क्लोराइड के. सो उसका मतलब क्या हुआ? ये सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में. सो दैट मीन्स इट इज सबलाइम. यस, उसको हम क्या बोलेंगे? सबलाइम. उसके बाद में वो वेपर्स ऊपर जाएंगे. यस, दे विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम हियर. यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. बट स्टूडेंट्स, but what will happen? They will not be able to go out, क्योंकि हमने वहां पर कॉटन प्लग से उसको पैक कर दिया है. तो वो वेपर वहां पर जमा होंगे. then the vapor starts to cool down. Yes, the vapor rise up. And when it cools down, तो जब वो कूल होंगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे solidified ammonium chloride लिखा है. That means this vapor, yes, of the ammonium chloride, when they cooled off, they converted into a solid ammonium chloride again. That is the sublimate. पहला हमने पढ़ा sublime, जो कि वेपर फॉर्म हुआ. अब वेपर जब कूल डाउन होकर फिर से सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन गया. दैट मीन्स क्या मिल गया हमको सब्लिमेट मिल गया. यस, सो इट कंडेंस एट एन अपर पार्ट, अपर कोल्डर पार्ट. ये वाला फनल का पार्ट थोड़ा सा ठंडा होगा ना एज कंपेयर टू ये पार्ट, बिकॉज द हीट इज गिवन हियर. यहाँ पर हीट प्रोवाइड हो रही है, तो ये पार्ट कंपैरेटिवली इट वुड बी कोल्डर. तो ये पार्ट में जब वेपर जाएगा ना, वहां से वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होते होते वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर वो सॉलिड फॉर्म में आकर जमा हो जाएगा.
यस इट विल बी देयर एज अ, ये वेपर यहाँ जमा हो गया और वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड में. So you can collect this solidified ammonium chloride from here and the salt जो है वो डिश में रहेगा. So in that way we can separate this ammonium chloride from salt by the process of, what is the process? By the process of sublimation. So I can say that the sublimate can be removed. Yes, the sublimate can be removed. I hope this is clear. यहाँ तक समझ में आया? The sublimate is removed. और sublimate कौन सा है? What is, which is the sublimate? The sublimate is nothing but it is your solid or solidified ammonium chloride. I hope this is clear. यहाँ तक समझ में आया? So this is how we can use this technique for a separation also. Yes, we have separate a mixture of ammonium chloride and salt. Yeah, so this is an experiment. कभी कभी आपको यदि एक्सपेरिमेंट पूछा गया तो आपको इस तरह से एक्सपेरिमेंट समझाना. आपको दो चीजें याद रखनी है कि पहले ये मिक्सचर में से अमोनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, व्हाइट कलर के वेपर्स बनेंगे जिसको हम सबलाइम बोलेंगे. यस, और जब ये वेपर्स कूल डाउन हो गए फनल के ऊपर के पार्ट में जाके तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड फिर से वैसा का ही वैसा बनेगा विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी. इसीलिए हम बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज है. यस, वी ऑब्टेन द अमोनियम क्लोराइड एज इट इज अगेन. नाउ इट इज सेपरेटेड. अब वो हमको मिला एज अ फॉर्म ऑफ अ सब्लिमेट. या So I hope this is very much clear. So this the first process that we have seen, that the conversion of this ammonium chloride, that is a solid, into the vapors of ammonium chloride. Yes, without going into a liquid state. So that process is called as what? That process is called as sublimation. ये है sublimation. Got it, students? Now, after that, one more thing or one more example we can say is your solid carbon dioxide. Solid carbon dioxide जिसको हम dry ice भी बोलते हैं. Yes, dry ice भी sublime होता है. It also sublime. We have seen so many examples. जिसमें से एक और example आप add कर सकते हो कि जो sublime होता है वो है solid carbon dioxide और it is also called as dry ice. और वो सबलाइम होके क्या बनेगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा. क्या सिमिलरली मैंने आपको वैसे ही बताया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द नेफ्थलीन बॉल्स आल्सो व्हेन केप्ट इन अ वुलन क्लॉथ्स दे विल डिसअपीयर विद टाइम, है ना, धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू होंगे बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन, है ना. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर. So it forms vapors very slowly and disappears into the air. That's why I told you that in the next season when you will take the sweater, आप जब अगली सीजन में स्वेटर निकालोगे आपके बैग में से और कबर्ड में से और आपको नेफ्थलीन बॉल देखोगे तो वो या तो पूरा डिसअपियर हो गया होगा, बट आई विल से पूरा डिसअपियर नहीं होगा तो उसका साइज बहुत कम हो गया होगा. दैट मीन्स इट इज सबलाइम. यस, इट इज डिसअपियरिंग विद द टाइम. उसको आप खुला रख दोगे तो बहुत जल्दी वो डिसअपियर हो जाएगा. यस, so in that way this is what is called as a sublimation. Now one more important point, that means ये हमने देख लिया कि when the solid is converted into the gaseous form. Now when a change of a gas to a solid without going into a liquid state, again this process is also possible and that is called as deposition. What is it called? It is called as deposition. and sublimation हो रहा है, solid का conversion हो रहा है gaseous form में, लेकिन जब ये गैस का gaseous form का conversion होगा solid state में on cooling. Now this will be not by heating, this is on cooling, remember. Yes, without going into a liquid state. This process is called as deposition. A very good example अभी हमने पढ़ा, वो हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा अमोनियम क्लोराइड का, उसमें यदि हम बोल सकते हैं कि जो वेपर्स बन रहे थे अमोनियम क्लोराइड के या जो सबलाइम था, जब वो कूल हुआ तो क्या बन गया,
on cooling, it has converted to a solid ammonium chloride, isn't it? So that, can we say that that is a deposition? You can definitely say that yes, that process, वो जो process हमने देखा वो क्या था, वो deposition. Yeah, so I hope this is clear. यहाँ तक समझ में आया everyone? So we have seen the two state, that when a solid can convert into a gaseous form, that is a sublimation. When there is a change of gas to solid on cooling, that process is called as what? Deposition. In both the state, there will be no liquid state will be there. Yeah. So now that all were the effect of temperature on the change of state of matter. Now, what are the other thing, that is effect of change of pressure? यदि हम प्रेशर लगाएंगे, यस, यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, सो इससे कैसे चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास ओनली कि दो फैक्टर्स पे स्टेट चेंज होगी. इट विल बी डिपेंड ऑन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था हमने हाउ वी कैन चेंज इट बाय the effect of temperature, by increasing the temperature or by decreasing the temperature. But yes, the change of state can also be done by change in the pressure. कैसे होगा? Now we know that any of the matter and any of the substance, they have the particles, and the particles um, are having some sort of space. It depends upon the type of substance, solid, liquid, gas. इसमें से यदि आप गैशियस स्टेट में देखोगे तो गैशियस स्टेट के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस है. यस, दे हैव अ लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम. सो हम वो गैशियस के पार्टिकल को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं. दे आर कंप्रेसिबल. दैट आल्सो वी हैव सीन. हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने देखा है कि द पार्टिकल्स ऑफ द गैशियस, दे कैन इजीली कंप्रेस बिकॉज there were lots of space. So because of that, we can use this change in the change of pressure also to change the state of a matter there. Okay, so physical state of matter can also be changed by increasing or decreasing the pressure. या तो आप increase करके उसको change कर सकते हो या फिर decrease करके भी उसको change कर सकते हो. What will happen when we start putting a pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? सपोज एक सिलेंडर में हमने गैस लिया है और वो गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर. प्रेशर अप्लाई करके हम वो गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कैन यू थिंक अबाउट दैट? Now again I told you, if it is a gas, यदि वो गैस है तो there is a lot of space in between the particles of a gas. So when you will compress that gas, the particles, they will start to come closer. जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा, है ना? और जो पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स है, वो पास पास आना शुरू कर देंगे. यस, सो वो कंप्रेस होना शुरू करेंगे. अब उसके बाद क्या होता है? What will happen? Come on, see. This is an experiment. You can see. आप यहाँ पर देख सकते हो क्या दिख रहा है. यहाँ पर हमको दिख रहा है कि there is a, yes, this is a cylinder in which the gas is there. These are the particle of a gas, students. Yes, now a piston is used, and piston is used to push this gas in a cylinder. यानी piston से हम उसको गैस को push कर रहे हैं नीचे की तरफ, यानी compress कर रहे हैं. ठीक है, जब हम compress करेंगे तो आप देखो ये जो particles है कितनी ज्यादा space है. Now the space between the particle has become lesser. पास पास में आना शुरू हो गए. So the gas particles comes closer. When we will compress it more, the particles, it will move more and more closer. इतने पास पास में आ जाएंगे, yes, कि उनकी जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाएगी. स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स विल बिकम वेरी लेस. और ये पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. यस, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, यू नो दिस थिंग, उसको लिक्विफाई किया जाता है. कैसे? बाय अप्लाइंग अ प्रेशर.
Yes, by applying a pressure. समझ में आया? So that is the one thing, that by applying a pressure, yes, you can compress a gas, but not only by applying pressure, एक और important thing रहेगी साथ में, and lowering the temperature. ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, प्रेशर इंक्रीज करना है और टेम्परेचर लोअर करना है. Why? Because जब प्रेशर इंक्रीज होगा, द हाई प्रेशर इट विल मेक द गैस टू कंप्रेस. गैस को कंप्रेस करेगा. जब गैस कंप्रेस होगी स्टूडेंट्स, दैट मीन्स व्हेन द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर एंड क्लोजर, व्हाट विल हैपन? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे और कंप्रेशन के कारण हीट प्रोड्यूस होगी. यस, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ हीट. हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं. अब ये हीट को तो वहां से निकालना पड़ेगा. यदि हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा काम नहीं होगा. सो इट इज डन बाय द कूलिंग. यस, उसको जब हम कूल करेंगे, दैट मीन्स बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, that means it is cooled there, and because of that the gas now starts to liquefy. So with increase in pressure, lowering in temperature is also that much essential to convert a gas or to liquefy a particular gas. Yes, so the gases can be liquefied by applying a pressure and lowering a temperature. Students, तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है. As the high pressure makes gas to compress and low temperature makes it to liquefy. Liquefaction करने के लिए temperature low होना जरूरी. Got it? So cooling, why the cooling is necessary? The cooling lowers the temperature. कूलिंग करने से क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो कंप्रेस गैस है वो अभी लिक्विफिकेशन और लिक्विफाई हो जाएंगे. यस, इट हेल्प्स टू लिक्विफाई दैट. I hope now this is very much clear to all of you. Yeah. So what is an effect of cooling? If a question is there, यदि को पूछा जाता है तो आप आंसर दोगे कि कूलिंग क्या करता है? It lowers the temperature of a compressed gas and helps to liquefy the gas. Got it, students? So this is an effect of change of pressure. तो हमने प्रेशर में क्या किया? प्रेशर हमने इंक्रीज किया है. Yes, we have increased the pressure there. So the next or another example you can take it as an ammonia. Ammonia gas जो है ना, उसको भी liquefy कर सकते हैं in the same way by applying a high pressure and lowering the temperature. Got it? One more example I will give you, that is solid carbon dioxide. अभी हमने पढ़ा था that solid carbon dioxide can also be converted directly into a carbon dioxide gas. That means it sublimes. Yes. So ये जो solid carbon dioxide है, ये गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है. कब होता है? जब उसका प्रेशर डिक्रीज किया जाएगा. यस, व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज टू or the solid carbon dioxide gets converted directly into a carbon dioxide gas on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into the liquid state. तो वो कन्वर्ट ना हो जाए. यस, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए, इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में रखा जाता है. दिस इज स्टोर्ड इन अ हाई प्रेशर. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज अगेन एन इफेक्ट ऑफ प्रेशर. If the pressure gets lower, the solid CO2 or the dry ice can be converted into a carbon dioxide gas. Yes, so to keep it in the solid state only, we keep the solid carbon dioxide in a high pressure, under a high pressure. So again, if there is a question, why solid carbon dioxide is stored under high pressure? This is because the solid carbon dioxide can be converted into the gaseous state on decreasing the pressure. Yeah, that's why to keep it in a solid state only, it is stored under a high pressure. Solid carbon dioxide को students हम dry ice भी बोलते हैं. Now there is a question, why we call it as a dry ice? Why we don't call it as a solid carbon dioxide? हम उसको solid CO2 भी बोल सकते हैं ना.
तो हम क्यों उसको नहीं बोलते, हम क्यों उसको ड्राई आइस बोलते हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेल्ट नहीं होता है लिक्विड में, सबसे पहली बात, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। नॉर्मल आइस जो है, बर्फ, जो नॉर्मल बर्फ है, वो पहले क्या होगा, वो मेल्ट होगा लिक्विड में, है ना, आइस चेंज टू लिक्विड। लेकिन ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में मेल्ट नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चला जाता है। यस, साथ साथ में जब उसको सॉलिडिफाई करते हैं, जब ये सॉलिड बन जाता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड बन रहा है, यस, वो एक आइस की तरह दिखता है, इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ एन आइस। Yeah, that's why we call this solid carbon dioxide as a dry ice. Yes, ये दो पॉइंट आपको याद रखने कि that the carbon dioxide, this solid carbon dioxide did not melt, sorry, in a liquid form just like your normal ice, as well as on just a minute. Yes, sorry. Also, when this gas is solidified, yes, it gives an appearance of an ice. Yes, similar to that of the ice. Is this much clear, all of you? Now, there is again a very much importance of the solid carbon dioxide. Solid carbon dioxide का use भी काफी कुछ है. वो white color का solid होता है और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. Yes, so it is very effective for cooling purpose, much more than an ordinary ice. Ordinary ice से भी ज़्यादा cool होने के कारण वो कूलिंग पर्पस में ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी आइस ऑल्सो. यस, सो यू रिमेंबर दिस इज द यूज ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ तक सभी को समझ में आया? I don't think now there is any doubt in your mind, any one of you. Yes, we have seen how we can change solid to gaseous state. Yes, this was by the process of sublimation. इसी तरह से हमने देखा कि डिपोजिशन में क्या होता है. डिपोजिशन में we have seen that a gaseous state can be changed into a solid. Yes, both of this without changing in liquid state, है ना. दोनों में हम liquid state नहीं देखेंगे. In the process of sublimation as well as in deposition, this we have seen. This was the remaining part of the change in the pressure, change in the temperature. Then we have seen the effect of change of pressure also. Yes, what we have seen, by increasing the pressure you can liquefy the gas. Yes, and when you keep the solid carbon dioxide under a low pressure, then this can be converted to the carbon dioxide gas. इसीलिए हम solid carbon dioxide को हमेशा high pressure में रखते हैं. Yeah, so we have seen how the change of state can be done. Yes, by changing the temperature or by the effect of the temperature as well as the effect of a pressure. I hope this is very much clear. Yeah, so till now we have seen the phases, that is in the change, which are the phases or how we have seen. You can see here, this is a very good figure where it is explained here. Like solid से जब हमने ice को देखा कि melt हो रहा है in a liquid. Yes, so that is conversion of solid to liquid by melting. Now the conversion of liquid to gas by evaporation, students. Conversion of a gas, yes, to what? To liquid again. Gas to liquid again on cooling, that is condensation. And a conversion of a liquid on cooling to solid, that is freezing. यानी ये होगा heating से, ये भी होगा on heating. Yes, this is on cooling and this is on cooling. Am I right? Now, this too. Conversion of a gas to solid directly, that is deposition,
and conversion of solid to gas directly, that is sublimation. So this is on heating, and deposition is again on cooling. Got it? So these all are the phases where the change of matter can be done by heating or cooling. That means by change in the temperature. So ये सारी steps आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. This figure also, just try to draw this figure in your copy, so that if some question is asked and they are asking you to give the relationship between all these phases of the change of the state of the matter, you can give in this flow chart. ये chart के through आप उसको समझा सकते हो, and it would be a very much easier and time saving. Yeah, so just remember this thing. So we have seen in the today's class that how the state of a matter can be changed. Yes, I hope you all understood it very nicely. आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. And yes, so we can say that the pressure and the temperature determines the state of a substance, whether it will be a solid, liquid or gas. है ना? प्रेशर और टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करते हैं? वो स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या फिर गैसियस स्टेट है. ये सो डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या जरूरी है? वी नीड प्रेशर as well as the temperature. And हमने अभी बहुत अच्छे से देखा है, we have discussed this in very much detail, that how this helps in the change in the state of a matter. Yeah, so I think it is done. Yes, and it is clear also. So I'll stop here, students. In the next class, we will discuss then another topic. Yes, so till then, thank you all of you very much for attending the class. Yes, till we meet in the next class. Keep learning. All the best for your studies. And yes, if you have not downloaded the Arth Academy app, you can download the app through the link. Yes, and if the link is provided here also, and in the description box also you will get the link. Because ऐप में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप जैसे लेक्चर्स आप देख रहे हो, यू आर गेटिंग द लेक्चर्स, आपको समझ में भी आ रहा है. बट यस, यदि आपको कोई डिफिकल्टी है, आपको डाउट है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी थ्रू देयर. यस, if you want we can take an doubt clearing session also. हम कोई एक आधा क्लास लेके हम डाउट क्लियर कर सकते हैं आप लोगों की. as well as you will get the notes, you will also get the study material, your question answers and everything, it is also be there. So try to be there and download the app also. Okay, so till then, all of you, bye bye, take care, see you and have a good day. Yes, bye students.